Bartlett and Sherbert I'm talking about. So that's a red book. A lot of questions are given in that book, but कभी हम लोगों को आता है तो कभी नहीं आता है. So I've solved all the questions. If you need any assistance to that, I can help you with that. And any parallel books जो हमारे वक्त में भी हम लोगों ने पढ़े थे तो उसके भी सोल्यूशन किए हैं. ओके, ऑफिशियली ऐसे बांट नहीं सकते हैं क्योंकि वो सोल्यूशन मैनुअल की तरह हो जाएगा, लेकिन अनऑफिशियली मैं कुछ कुछ करके आपको दे ही सकता हूँ. तो ये जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये जो एग्जामिनेशन से कॉन्सेप्ट है, तो इसको किस तरीके से ग्रिप में लिया जाए. जैसे मान लीजिए आपको कॉन्वेक्स सेक्स समझना है, ठीक है, या फिर आपको समझना है सुप्रीमा इन्फीमा. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सुप्रीमा इन्फीमा को लेके. तो कोई भी एक फंक्शन है तो याद रखने का थोड़ा बहुत स्टाइल आपको समझना है. सुप्रीमा इन्फीमा, ठीक है. अब ये क्या मैक्सिमा मिनिमा ही हो गया? नहीं, लोगों ने नाम दिया है GLB, LUB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, बहुत कुछ है. ओपन सेट, ओके, इट्स अ फाइनाइट सेट स्ट्रक्चर, फिर इसमें होगा नहीं होगा. देयर इज अ गुड बुक ऑन रियल एनालिसिस, राय सिंघानिया, इंडियन ऑथरों में. इन्होंने काफी कुछ बहुत सारे ऑथरों से इधर उधर लिया है, बट अच्छा कॉम्पाइलेशन, ठीक है. तो मैं एक दो चीजें मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ. तो मैं किस तरीके से क्लासेस लूंगा. आज ज्यादातर मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा. सो सुप्रीमा इन्फीमा हैव वी डन इन दिस क्लास? अभिज्ञान सर हैज थिंक आई हियर स्टार्टेड दिस थिंग. यस और नो, भाई बताओ. जस्ट अनम्यूट एंड से yes sir. Yeah, good. So now suprema infima with a different touch. First, हम लोगों को क्या याद रखना है कि सुप्रीमा ही है मैक्सिमा और इन्फीमा है मिनिमा. ये भी सिर्फ याद रखने के लिए, कॉन्सेप्चुअली नहीं. सुप्रीमा मीन्स हम लोग समझ लेंगे सुपीरियर, और इन्फीमा को हम लोग समझेंगे इंफीरियर. बस, मतलब ये है बड़ा और ये है छोटा, लेकिन एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर. जैसे मान लीजिए ux इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है, या फिर 4/x, और x हमारा है एकदम नेचुरल सा नंबर है जो स्टार्ट होता है कहां से? नेचुरल नंबर 0 से ना, या 1 से? क्या लगता है? या माइनस इन्फिनिटी से? कहां से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर? Sir, 1 sir. Everyone else also give it a try if you are not agreeing with me. Say yeah. तो 1 से स्टार्ट हो गया. सो पहला 1 डाल देते हैं खुशी खुशी. देखो, जब मैंने पहली बार ये रियल एनालिसिस, ये सीक्वेंस सीरीज किया था, सो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस वर कमिंग इन दिस 1-2 टाइप ऑफ फॉर्मेट. ओके, तो मैंने उसी को ही थोड़ा एडवांस वर्जन में आप लोगों को दिखाने का सोचा है. सो दिस इज 5, दिस इज 2 + 2. सो दिस सिस्टम इज फॉलोइंग दैट फॉर श्योर. U3 is 1 + 4/3, that is 1.33 + 1, that is 2.33. तो भैया ये नीचे जा रहा है, तो कहां तक जाएगा? सबसे बड़ा वैल्यू भी डालेंगे तो ये 4/∞. ओके, तो हमारा ये पैटर्न में थोड़ा बहुत गड़बड़ है. अब मैं इसको मान लेते हैं चेंज करता हूं. सो ये ∞ में ये आ जाता है, इज द लास्ट वैल्यू वी पुट, दिस इज ओपन एंड केस हो जाए. ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए एक छोटा सा ज्ञान मैं पहले ही देना चाहूंगा. क्या वैल्यू है इसका? क्या ये वैल्यू है इसका? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या मैं लिखूंगा? 2∞. हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? क्या लगता है? सर नहीं हो सकता. या so infinity plus infinity, first of all this equal to sign is a problematic thing. So you can't go for equal, is only applicable in higher level of mathematics when you have an exact point. Here we don't have an exact point anyway, but फिर भी अगर मान लेते हैं, so this is actually gives you another infinity. So infinity minus infinity must be giving us a 0. No sir. No, ठीक है, तो क्या देगा? Another infinity. Sir undefined है, कुछ भी हो सकता है. Yeah. So infinity minus infinity can be 0. Is a possibility, you know. The first one which every one of you rejected. So मान लेते हैं two very large numbers, but they are very exactly the same numbers. Possible. So they are 0. Or they are very
different from each other, that's infinity, or they are very much same to each other but not exactly the same, so that may give a finite value. So this is the undefined. So infinity plus infinity by infinity हो गया, और infinity minus infinity में तीन तीन आंसर आ जाए. So this is the kind of a scenario which you will face in this. So this is infinity. So यहाँ पर मैं देखो भाई जो बाउंड आया, एक बाउंड तो मेरा आया नहीं कि मैक्सिमम, दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ. ये जब बढ़ते 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 1 by infinity में चला जाएगा, सो दैट इज अ प्रॉब्लम. लेकिन यही चीज अगर रहेगा x plus 4 by x, then it is 1 plus 4 by x. Then the similar kind of a thing will go on. First value is 5. Second value is 1 plus 4 by 2, 3. Then 1 plus 4 by 3. Oh, this was 2, I guess. मैंने यहाँ 2 लिया ना. 3 plus. Yeah, 3. 3 plus 4 by 3. So this is 4.3. No, 2 plus 4 by 2, 3 plus 4 by 3, 1.33. Yeah, 4.33. In that way it was happening. But in this case, if you see this, 1 plus 4 by 1, this is 5. Then this is 3. Then this is 2.33. This is definitely falling. And the last is 1 plus 4 by infinity. So this is falling at 1. So here in this case, अब तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गया, defined values. सब कुछ थ्योरी, सब किताब बाटले शेरवट को लेफ्ट साइड में रखिए, और ये हो गया आपका सुप्रीमा और ये हो गया आपका इन्फीमा. दैट्स इट. और कुछ टेंशन ही नहीं है. अगर काफी बार ऐसा होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, तो सुप्रीमा इन्फीमा दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज देयर इज नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड. अब जीएलबी एलयूबी है क्या? व्हाई दिस थिंग इज सो मेनी इंपॉर्टेंट इनटू आवर सिस्टम? व्हाई इट इज सो अनोइंग? तो मैं आप लोगों को ये ऐसा देता हूँ, -4 लेस देन x प्लस 4, -3 लेस देन x 10, -2 less than x, maybe 1, then maybe अच्छा इसको 100 कर, p less than x less sorry 1.3 less than x 97.33. ठीक है. फिर e to the power minus e to the power 7 less than x less than log of 10 to the power 57. Okay, so many numbers are like this. Now, in these kind of questions, if I ask you, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए, तो यहां पर मैं जीएलबी एलयूबी का क्या काम? यहाँ पर अगर आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से करे, ठीक है, तो रास्ता आप ही को निकालना है. So these are all minimum values. ये छोटे मोटे वैल्यूज. तो हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे मोटे वैल्यू का सबसे पैसे वाले को निकालते हैं. So that is 1.3. ठीक है. गरीबों का देखिए, गरीब का रिच, और इधर आ गया रिच का गरीब. सो रिच लोगों के अंदर जो गरीब है वो कौन है? सो यहाँ सबसे गरीब है अपना 4, और ये गरीब लोगों में सबसे रिच है 1.3. सो ये क्या हो गया? दिस इज द GLB, isn't it? This is the greatest lower bound, and this is the लब कुश वाला लब हो गया, लीस्ट अपर बाउंड. बस काम खत्म. सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया, लीस्ट अपर बाउंड मिल गया, बस सोना चांदी एक साथ मिल गया. और आपको क्या करना है? सिर्फ आंसर लिखना है. तो इस सिस्टम ने जीएलबी ये है 1.3 और एलयूबी हो गया ये. जैसे हमारे पिछले सिस्टम में हम लोगों ने जो वैल्यूज लिए थे, सो दिस इज द जीएलबी एंड एलयूबी. तो दिस इज द मैक्स अमंग द मिनिमम, and this is the minimum in max. Yes, tell me. Sir, lower bound means minimum value in the set. Can we Sorry? say that?
Sir, can we say that lower bound means minimum value in the given नो sets? नो नो नॉट इन दैट वे। देखो दोनों में एक फर्क है, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अभी ये थोड़ा ज्यादा ही बेसिक तरीके से हो रहा है, थोड़ा एडवांस लेवल में चलो। थोड़ा एडवांस लेवल में अगर जाएंगे, इफ आई टेल यू कि मैक्स तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट्स योर नेम? Priyanshi. या प्रियांशी, इफ आई आस्क यू कि कौन सा मोबाइल चाहिए, तो तुम क्या कहोगी? मतलब तुम्हारे पास एनॉर्मस कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम शायद कहोगी आईफोन, है ना? आईफोन कहोगी, आईफोन 14 प्रो मैक्स, बाप रे। या फिर any other phone if you have enormous amount of money in your hand? Yes or no? मुझे इससे कॉस्टली कोई फोन के बारे में पता नहीं है, शायद आप लोगों को पता होगा। देयर इज अ गैलेक्सी फोल्ड इज आल्सो देयर, फोल्ड 5, ये भी 1.5 लाख का दाम है। ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ पुटिंग समथिंग आउटसाइड, सोना वोना डाल के मोबाइल को और कॉस्टली बनाना। सोना वोना डाल के कॉस्टली बनाने को मैथमेटिकल टर्म में क्या कहेंगे? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। Neighborhood of a point means which is known to this, the entire system works exactly the way the system inside or the points parenthesis. So अगर मैं यहाँ extends to 0 है and all the things, तो वहां भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं iPhone Pro Max है या फिर ये हमारा neighborhood of a point। इससे extended में any external thing coming into the system, that's a different story। ठीक है, तो अभी दुनिया के हिसाब से these are like the costliest। मैक्स खत्म। अब मान लो 512 जीबी, 1024 जीबी, व्हाटएवर, जितना मैक्सिमम लोगों ने बनाया आपने खरीद, बट दिस आर मैक्सिमम थिंग। बट मैं बोलता हूँ आपका सैलरी है 78,000 रुपीज पर मंथ, नाउ यू कैन ओनली मैक्स आउट टू मे बी आईफोन 13 और मे बी सैमसंग S22 लेटेस्ट मॉडल आप खरीद नहीं पाए। गेटिंग? तो यही है मैक्स आउट मीन आउट का मेन चीज। मैक्सिमम इज नो लिमिटिंग, नो रेस्ट्रिक्शन। तो अगर जनरल डेरिवेटिव जब क्लास 11-12 में किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ जब dy/dx किया यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं। लेकिन जब लाग्रांजियन मल्टीप्लाई डिफरेंशियल कैलकुलस में आया, सो l इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, आप बहुत खुश हो गए। प्लस 4y भी मैंने डाल दिया, बहुत खुश हो गए। चलिए सर दो वेरिएबल है और मैंने डाल दिया x प्लस y लेस देन इक्वल टू 3। So now you are working on this restricted. Still you are finding the maximum, but this is a parameters. So these are restriction based. Okay. So maximizing subject to, this is called, इसे क्या कहते हैं mathematical term है constraint. So it's a constraint maximizational structure. We cannot say it's just a max or mean very directly. It's on the basis of the given structure you are finding. So this is the concept of GLB and LUB, and that is the concept of suprema and infima. Guys and girls, you can apply this very easy class 11-12-ish type of formulation or idea to anything. तो higher mathematics कुछ भी नहीं है, 11-12 जैसा ही है। सिर्फ हम लोगों को पास 11-12 में एक बुक होता था, उसमें सारा कुछ अच्छे से पढ़ लेते थे और अप्लाई कर देते थे। जॉइंट पॉइंट के लिए 2-3 एक्स्ट्रा बुक पढ़ते थे, बस काम खत्म। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के लिए 4 बुक पहले ही आ गया था आपके पास। इसीलिए हायर मैथ्स थोड़ा बहुत ज्यादा ही टफ लगने लगा और कुछ नहीं। बट यू कैन सी इट्स ओनली अ जस्टिफिकेशन ऑफ दोस थिंग एक्सेप्ट वन टॉपिक दैट्स कॉल्ड, जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग रहेगा, ट्रिपोलॉजी। तो इसमें कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ चीजें हैं और आप लोगों का पुराना जानी दुश्मन तो है ही, ग्रुप, रिंग एंड फील्ड। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छोड़ के बाकी सब ठीक है। और एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 2-3 जगहों में मैं इतना नहीं कहूंगा कि इट्स वेरी इजी, बैठ जाओ हो गया, इट्स लाइक अ लॉलीपॉप ऑल यू हैव टू गो एंड बाय, बट ये ऐसा ही है। टिल नाउ एनी प्रॉब्लम? सो आई ऑलवेज लव टू गिव यू अ पैरेलल एग्जांपल। मैंने अपने करियर के शुरुआत में मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पढ़ाया करता, ठीक है? तो फिजिक्स जब पढ़ाता था तो आई हैड सेट अप वन स्मॉल लैब एट माय रूफटॉप, ठीक है? तो उस रूफटॉप में मैं पहले स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिकल पहले कराता था,
और उस प्रैक्टिकल में इट वाज लाइक अ मैजिक. इफ यू डोंट नो दिस थिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इट इज ऑलवेज लाइक अ मैजिक टू यू. एंड देन आई फिगर्ड आउट कि आप थ्योरी में थोड़ा बहुत जाते हैं. अब देखो केमिस्ट्री में बिना थ्योरी जान के जाने से जलने का डर है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा भी नहीं था. लाइक पहले दिन तो गॉर्नियर स्केल स्लाइड कैलिपर से वी यूज्ड टू स्टार्ट, बट आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो किस तरीके मतलब ऐसे किताबों में ऐसा ऐसे दिया रहा था, दैट वाज टू बोरिंग टू वर्क. So here also I will be taking you through some practical journeys and exemplification so that you can get a better understanding of it. Okay, so सुप्रिया इन्फिमा को जैसे बोला, जीएलपीएलयू को जैसे दिया, या फिर जिस तरीके से कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को लाए हैं उसी तरीके से ही दो तीन चीजों को और लाए. यहाँ पर में मुझे तुम लोगों से जो चाहिए वो है इस चीज के ऊपर ज्ञान. इस चीज, ये पाई नहीं है, ये पाई नहीं है. दिस इज एक्स आई मीन्स x1 x2 डॉट 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 xn. ठीक है. अच्छा, मुझे और एक चीज चाहिए आप लोगों से, उसका नाम है GIF. पूरा फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मल तरीके से लेंगे तो 2.99 ऑफ GIF में 2 आएगा, 2 में भी 2 आएगा, 2.07 में भी 2 आएगा. द ग्रेटेस्ट इंटीजर इज दिस वन. कुल ये तीन आपको अगर पता है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस पता है तो ये चैप्टर आपके लिए आ सकता है. तो विदाउट फर्दर दिस थ्योरी में थोड़ा बोर ना करते हुए तो चल पहले सम करिए. एग्जाम में आएगा क्या एग्जैक्टली होता क्या है. ओके, लेट मी सी. लिस्ट तो बना के रखा था. जस्ट एक सेकंड. यस,
Okay, begin. Sorry for the delay. Yeah, very good. Now you'll see the PDF on screen. The big PDF, almost 106 pages है. देख खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है. As you can see. चलिए पहला क्वेश्चन तो मैं खुद ही से देख के करा दूं. They have given as an expression. करने भी नहीं देना. So it's a convergency and divergency checking type of a question. Okay. So you have to say whether it's a convergent and divergent. I guess everyone by this time know what is the convergent and what is divergent. For example, if I have a 1 by n, that has to be a convergent form. And if I have only n square, that has to be a divergent. Not that easy, but this is for the basic understanding I can say. चलिए आप ये भयंकर पीडीएफ खुल गया आपके सामने. So you can see this. Everyone can see, I guess. तो यहाँ पर है an is this n square plus k and the sequence is convergent, divergent, bounded, not convergent, neither bounded, not divergent. ठीक है. ये बाउंड होता है क्या? बाउंड मतलब वही ये आप भाग रहे हैं, जो रस्सी से आपको बांध के रखा है. ठीक है. ये जितना दूर तक आपको ये रस्सी जाने देगा, दैट्स द अपर बाउंड. ओके. यहाँ पर लोअर बाउंड है, आप कितना अंदर तक आ सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम मच ऑफ इट. ये अपर बाउंड लोअर बाउंड को लेके एक हायर लेवल के मैथ्स में एक क्वेश्चन आया था. इट वाज अ सर्कुलर पाथ और यहाँ पर में एक छोटा सा दिस है. ठीक है. और सॉरी ये फेंस के ऊपर, तो फेंस के ऊपर में लगा हुआ है एक रस्सी. सो देयर इज अ स्मॉल वायर. सो दिस इज द एरिया, total area can be covered by a small goat. ठीक है. अगर रस्सी यहां से भी लगा हुआ है, so it can cover this area. It can also go to this area also. So area coverage. Yeah, sorry. सर और एक बार फर्स्ट से बोलिए. What is that? सर एक बार फर्स्ट से के बोलूं ना. Yeah, so it's a circular path and a goat is being tied at a point on the fence. Okay, on the circumference, and it can move in this way, but obviously this is not if this is a circle, अब goat तो ऐसे तो move नहीं करेगा ना. यहाँ से गया एकदम straight line में move करता हूँ. So it will try to get the maximum area, जो कि इस तरीके का कुछ area होगा. Okay. And again, if you put it here, then this is the area. Although it's not a geometry class, I will not do it, don't worry. It will take some time. Around 20 minutes का video मैंने इसके ऊपर बनाया था. So इस जैसा. So if there are 4 goats are like this,
and it has been an intersecting point every time for the goats. So even after they finish up eating everything, will there be any area where grass is still left? That was the question. And given that the goats are very friendly to each other, so यहाँ भी वैसा ही है. So boundedness याद आ गया कि this is the maximum जो goat ये खाने के लिए भाई allowed है, रस्सी जितना allow करना है. Clear? So let's see this. So the first question, n by n square plus k. So n square plus k means n by n square plus 1. मैं बहुत आसान तरीके से करता हूँ, जैसे कि कुछ टेंशन ना हो. N square plus n. Now n square plus n has to be greater than n square. इतना तो सही है. So 1 by n square plus n is less than 1 by n square. Clear? So अगर both side n multiply भी कर दिया, so n by n square plus 1 is less than n by n square. That's for sure. इसको first लेते हैं, इसको second लेते हैं. Okay. So using this 2 in 1, we can say an equal to n by n square plus 1, n by n square plus 2 dot 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 n by n square plus n less than n by n square, n by n square. सभी कुछ चीजें ही ऐसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता 1 2 3 4 से dot 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 n by n square, which is nothing but n into n by n square. So this is n square by n square, that is equal to 1. So I can say that an भैया हमारा है less than 1. Wow. अगर ये less than 1 है तो ये bounded above हुआ कि bounded below हुआ? क्या लगता है? बाउंडेड above. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है. मुझे तो हमेशा प्रॉब्लम होता था, मैं ग्रेटर देन को अब समझ लेता था. आप लोग भी वही समझते हो, ठीक है? तो उल्टा ही समझो. लेस देन मींस एक्चुअली बाउंडेड अबव, इट्स नॉट द बाउंडेड बिलो. अभी तो ऐसा लग रहा है, बट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन व्हेन यू आर वेरी फास्ट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, सो दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स कैन हैपन. सो दिस इज बाउंडेड अबव एंड an ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज. अच्छा, ये साइन पता है ना, ऐसे v लिख के इस तरीके से करने का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज. ठीक है, मतलब उल्टा एक ही तरह समझ लो. वैसे सबका नाम है, जैसे इंफिनिटी साइन हम लोग बोल देते हैं, इंफिनिटी हैज इट्स नेम. एनीवन नो व्हाट इज द नेम ऑफ इंफिनिटी साइन? अब गूगल या चैट जीपीटी मत देखना, ठीक है? चैट जीपीटी ये आंसर दे देगा, लेकिन चैट जीपीटी एक मैथ्स वालों का कोई हेल्प नहीं कर पा रहा. आज ही मैं थोड़ी देर पहले आईएसआई के बैच में दिखा रहा था, बी स्टैट के बैच में, कि लास्ट डिजिट फाइंडिंग, लास्ट 3 डिजिट फाइंडिंग 4 बार चैट जीपीटी 4 बार में 4 आंसर दे रहा है. तो मैथ्स वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, केमिस्ट्री वालों के लिए नॉट अ गुड न्यूज. ठीक है, बाकी नॉर्मल ऐसे सिनोनिम एंटोनिम देखने के लिए ठीक है. तो चलिए बताइए, साइन का नाम क्या है? इस साइन का कोई नाम है? क्या है वो? इंफिनिटी साइन नहीं, मत बोलना. आंसर है, लिखिए लेमनीज लूप स्केल. का. सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सर लूप के लिए इसको यूज किया जाता है. किसके लिए? लूप? हाँ. हाँ, दिस इज अ साइन ऑफ इंफिनिटी हैज इट्स नेम. आई एम आस्किंग द नेम. बताओ. दिस इज कॉल्ड लेमनीस्केट, LEMNISCAT. ठीक है. अच्छा, ये साइन का भी एक नाम अच्छे से दिया गया है. इसे नाम दिया है UQ साइन. पूरा नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर. यूनिवर्सल इट कैन अप्लाई फॉर ऑल द वैल्यूज. अच्छा, और भी कुछ? अच्छा, इसका भी एक नाम मैं बता देता हूं, कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है. देयर एग्जिस्ट. ओके, देयर एग्जिस्ट.
तो अभी तक सम वैसे खत्म नहीं हुआ है हम लोगों का. सर Let me just finish it off, then I will invite the questions. You can in the meantime can write it down. Sir, what's the full form of Q? Universal quantifier. चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सम को करते हैं. So bounded above and n greater than 0 भी है, ठीक है. तो bounded above plus bounded below, BA and BB. So bounded above and bounded below. Bounded but not convergent, bounded ये वो, ठीक है. अभी convergent या divergent होने का तो chances मुझे लग रहा है. तो आगे बढ़ते हैं. Now k is less than equal to n. So n square plus k less than equal to n square plus n, both side n square से बैठ किया. n by n square plus k greater than equal to n by n square plus n. पिछले बार का ही गेम फिर से खेल रहे हैं. So if this an value is summation of n by n square plus k greater than equal to summation of n by n square plus n, yes or no? So this thing, hence n by n square, this summation is greater than an. That is summation n by n square plus a. तो यहां से क्या लिख सकते हैं? n into n by n square an greater than equal to n into n by n square plus a. That is nothing but n by n plus 1 taking n common, which is less than an less than equal to 1. लिमिट ले लीजिए. लिमिट n tends to infinity n plus 1, limit n tends to infinity an, limit n tends to infinity सिर्फ 1. So 1 less than equal to, ये infinity देने से ये 1 आ जाएगा, है ना. 1 both side से n से डिवाइड करेंगे. 1 by 1 plus 1 by n, 1 by infinity, तो that is 1. Limit n tends to infinity an less than equal to 1. So this is the final verdict here. So here we can say limit n tends to infinity an equal to be 1. यहाँ पर एक थ्योरम लगा है, पता है वो कौन सा थ्योरम है? अगर मैं इसको फाइनाइट वैल्यू बोल दूं, so this is actually एक थ्योरम. थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है. इन समझ में आया? सैंडविच थ्योरम. बिल्कुल सही. तो तुम डिसाइड करो कि ये चिकन या मटन या वेज. तो मटन सैंडविच होता नहीं, ठीक है. सो सैंडविच थ्योरम से मैंने ये किया, ठीक है. एन इस तरफ से भी है, एन उस तरफ से भी है, तो बीच में हो गया हमारा सुंदर वाला सैंडविच. भाई फटाफट बताओ सैंडविच थ्योरम कितना लोग बढ़िया से भूल चुके हैं? तो ये हाथ उठाइए. बाप रे बहुत सारे. ठीक है, और कोई? देखो अगर हम लोग गूगल करेंगे सैंडविच थ्योरम को, तो भाई सबसे बहुत प्रॉब्लम होता है. ये गूगल में क्या देता है ना, एक अलग सा ही चीज बता देता है. किताबों में भी दिए हुए, ठीक है. तो मैं थोड़ा अलग कुछ बताने का कोशिश करता हूँ थ्योरम. तो सैंडविच थ्योरम का मतलब है एक सेम नेबरहुड है. मतलब एक पाड़ा में दो लोग रह रहे थे और दोनों लोगों का सब चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है. फिर दोनों ने सोचा एक साथ ही रह जाते, एक ही वैल्यू होगा. फिर जब दोनों का अलग अलग से इलेक्ट्रिसिटी बिल था, सेम हो गया. सरकार को भी अलग से भेजने का झमेला नहीं है. So when two functions are very close proximity, so we are squeezing down the differences between the two values and their applicability under the same limits, and then we are assigning a symbol. इसका मतलब क्या दोनों सेम हो गया? सैंडविच थ्योरम doesn't mean दोनों सेम. दोनों लोग अलग रह रहे,
अब एक साथ रह रहे मतलब दोनों के एक ही आदमी हो गया? नो, दे आर स्टिल डिफरेंट पीपल। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये लोग नहीं रह सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज, है ना? तो मैरिज का मतलब थोड़ी ना है कि दोनों पूरे अलग अलग नहीं हो सकते, बिल्कुल अलग हो सकते हैं, बट नॉट टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। मतलब सुबह और शाम को जब दोनों ऑफिस के लिए निकलेंगे, एक का सुबह ऑफिस है, एक का शाम को ऑफिस है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है? जैसे मान लो आपके पास 3 तो फंक्शन है, यहाँ पर से एक फंक्शन है f1, f2, f3, ठीक है? और ये तीनों फंक्शन के बीच वाला फंक्शन ये है। तो मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सेम करके आई एम फॉर्मिंग अ न्यू फंक्शन। ओके, लेकिन एक ही चीज है, दोनों एक इंटरवल के अंदर रहना चाहिए, जो मैंने नेबरहुड शब्द इस्तेमाल किया। ओके, क्यों होगा? जब लिमिट ऑफ अ फंक्शन हार्ड टू इवेलुएट डायरेक्टली, जब आएगा ही नहीं, तब ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सैंडविच थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंपलर फंक्शंस। ओके, सब फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा ऐसा बिल्कुल मत सोचना। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंपलर फंक्शंस। क्लियर? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इन लोगों ने हाथ उठाया था, आप हाथ नीचे कर लो। ये सम हो गया ना, a इक्वल टू 1, सैंडविच थ्योरम लग गया। सो बाउंडेड भी हो गया और कन्वर्जेंट होके 1 में कन्वर्ज भी कर गया। बाउंडेड और कन्वर्जेंट मतलब क्या है भाई? ए, सो कन्वर्जेंट, सो बाउंडेड एंड कन्वर्ज, कन्वर्जेस टू 1। दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी बता दिया। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सर या सर ये बाउंडेड अबव है ना? बाउंडेड बिलो भी है, किया ना ये? देखो, लोअर बाउंड इज 1, बाउंडेड अबव। एक तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पूरा यहाँ से निकाला ना, सो दैट वाज द वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गॉट। बाउंडेड बिलो, एन इज बाउंडेड बिलो, शुरुआत में आया। ठीक है, एन लेस देन 1 और ए एन लेस देन 1 एंड ए एन ग्रेटर देन 0, ये दोनों अलग से आया। बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों ही थे। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये यहां से कैसे आ गया? इतना आसान सा चीज। ठीक है, रियल कोएफिशिएंट से यहाँ पर निकालना है, रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है, बहुत आसान है। तो ये आप लोगों से खुद ही हो जाएगा, लॉट बी डूइंग इट। ठीक है, पता है रियल रूट कितना है? सिर्फ देख के कितना? Sir, 1. या कैसे पता चलेगा? Sir, discard is full of sign. या अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, कितना साइन चेंज है? प्लस से माइनस एक साइन चेंज, मतलब एक पॉजिटिव रियल हो गया। माइनस कर दो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, कोई साइन चेंज नहीं, 0। टोटल कितना था? रूट 3। तो 3 माइनस 1, 2 इमेजिनरी और एक पॉजिटिव रियल। रियल रूट ही पूछा है, सो 1। लिमिटिंग वैल्यू लिमिट का सम है। आई गेस यू गाइस कैन डू इट। जानबूझ के थोड़ा बहुत ये सब भी मैंने इस लिस्ट में रखा है इन ऑर्डर फॉर वार्म अप दौर जैसे होता है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये नाम सुनने से ही सबको डर लगता है ना? रीमान। ओके, सो रीमान ने एक सम दिया था, रीमान सम फॉर डेफिनिट इंटीग्रल। ये आपको काम आएगा। रीमान ने कहा कि लिमिटिंग वैल्यू तो हम ले रहे हैं भैया, तो यहां पर मैं एक समेशन भी डालेंगे। बढ़िया, समेशन डाल दिया। समेशन डालने के बाद एफ ऑफ के बाई एन भी करेंगे, चलो वो भी खुशी खुशी कर दिया। जस्ट अ सेकंड।
ओके, तो ये भी खुशी खुशी डाल दिया, 1/n ऐसा। सो फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल k by n, और यहाँ पर k इक्वल टू 1 to n है, ठीक है। तो ऐसे केस का आंसर क्या आएगा, उन्होंने कहा 0 to 1 f(x)dx, बस इससे जो आएगा वही है। तो रीमान सम ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल हियर। हाउ? एनी वे आउट, किस तरीके से ये क्रूशियल रोल प्ले करेगा? सर वो 1/√n² प्लस kn को हम लिख सकते हैं 1/n इंटू 1 प्लस k बाई, मतलब 1/n इंटू 1/√1 प्लस k बाई n। तो x को 1 प्लस k बाई √1 प्लस k बाई x ले लेंगे। n tends to infinity 1, let's take a n outside, n square को कॉमन लो, so n square कॉमन हो जाएगा, ये 1 k by n है, so this is the thing, so k by n square, this n square inside. So very next line, limit n tends to infinity 1 by this 1 by n 1 by √k by n, then again 0 to 1 1 by √1 plus x dx. So this is limit n tends to infinity summation 1 by √n square plus k. तो यहाँ से हिसाब से आ जाएगा this whole to the power half 0 to 1, so 2√2 minus 1, option A. So very quickly, by utilizing Riemann's sum for definite integral, we can find it. So करने का मूड नहीं था, फिर भी कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, this page is hanging due to a huge number of pages. मैं से restart करता हूँ। Next one. इस बार पूछा है the set of all in this power series. अरे यार इसमें तो इतना ही मुश्किल है। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, एक पावर सीरीज दिया है और ये कन्वर्ट कहाँ करेगा इसके ऊपर। आई विल गिव यू अ हिंट ऑन दिस, जब तक ये सिस्टम अपने आप को ठीक करता है। अगर कर पाता है तो लेट मी रीस्टार्ट द प्रोग्राम। Let me share the entire window.
A set of all values in the power series and it converges. So ये power series है अपना. So here good old school कभी खेलना पड़ता है. Good old school क्या है? Limit n tends to infinity an plus 1 by an. This is the an thing. और an plus 1 यहाँ से निकालना कोई बड़ा बात नहीं है और उसको निकाल के आपको करना है whether this value is less than 1 or not. तो कन्वर्जेंट का आपको एक yes और no मिलेगा. ओके एंड देन हर एक इंटरवल में डाल डाल के चेक कर. ओके सो इफ यू वांट मी टू डू आई कैन डू इट. कितना लोगों को चाहिए मैं कर दूं या फिर कर पाएंगे? टेल मी. थोड़ा टाइम दीजिए. ओके टाइम नहीं अभी करना नहीं, घर में ही करना है. घर में हो जाएगा या फिर मैं कर दूं? हार्ड टू से. तो चलिए चाहते हैं तो मैं कर ही देता हूँ. सो दिस इज an plus 1 by an limit n tends to infinity. So n plus 1 2n plus 1 whole square and this is x minus 2 3n plus 3 ये डालेंगे 2n plus 1 n की जगह n plus 1 डालेंगे तो 2n plus 3 square n this thing, so x minus 2 all to the power 3. So QUARRIES convergent if less than 1 and so this x minus 2 whole cube is less than 1. So mod of x minus 2 हो जाएगा 1. So 1 less than x minus 2 less than 1. So 1 less x less 3. So for 1 to 3 the series is convergent. 1 से 3 के बीच में. But ऐसा कुछ है ही नहीं. ठीक है. लेकिन 1 3 इज अ पॉसिबिलिटी. सी और डी में से ही कोई आंसर होगा. -1 to +1 में नहीं. अभी हम लोग को दोनों में चेक करना है कि किस में ये इक्वल टू होगा. सो हम लोग का ऐसा आया है नाउ किसी एक में 1 में इक्वल टू डालना है. देखो यहाँ पर में क्या है. दिस द फर्स्ट वन इज less than 1 less x less 3. Second one is 1 this thing and this. यही है. तो इतना तो पता है कि 1 वाले में उतना मेरा टेंशन नहीं है, ये दोनों सेम ही है. बाकी टेंशन दूसरे में है ना. अब एक वैल्यू लेते हैं 2 which lies between 1 and 3. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा. सो ये x equal to 2 में तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ही. बट x equal to 0 में नहीं होगा. So option A and B are incorrect as I have said. Now n by 2n plus 1. This is the exact way you will do it at the examination also. N by 2n plus 1. It's a monotonically decreasing sequence. Power नीचे ज्यादा है for positive terms. So n by 2n plus 1 whole square tends to 0 as n tends to infinity. अभी हम लोग करेंगे Leibniz steps. कहां पर? At x equal to 1. इसमें तो ये कन्वर्जेंट आ ही जाएगा. Again at x equal to 3, ये जो पावर सीरीज है n by 2n plus 1 whole square. So suppose un equal to this value, un equal to and vn equal to 1 by n. Just एक रेशियो सा इस्तेमाल करेंगे. लिमिट n tends to infinity un y vn हो गया.
So limit n tends to infinity, n by 2n plus 1 whole square into n by 1. Okay? So limit n tends to infinity, 1 by 2 plus 1 by n square. So that is 1 by 4, which is a finite value. So summation of Vn and summation of Un converges or diverges together. So here summation of Vn diverges with respect to P test. So Un also diverges. So at x equal to 3, non-convergent. तो 3 में ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, तो 3 में इक्वल नहीं हो रहा है, तो बस काम खत्म. सो 1 के हिसाब से हम लोगों का चेकिंग करने का टेंशन था ही नहीं. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट, और फिर दोनों पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने चेक किया कि 3 में इक्वल टू रखने से फायदा है या फिर नॉन इक्वल. एंड वी हैव प्रूव्ड इट वेरी इजीली विद रिस्पेक्ट टू आवर स्ट्रक्चर कि अगर ये 3 हुआ तो इट्स नॉट. ओके, hence the answer is like this. So C is that. It was a bit lengthy, but this is the easiest way to understand these kind of problems. तो ऑप्शन को देखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा ऑप्शन आपको आगे बढ़ने के लिए मौका देगा, लेकिन बाकी का रास्ता आपको खुद ही चाहिए. So और एक बार एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट से. Yeah. So till now this is okay. So 1, 2, 3. So I've taken a point 2 within 1, 2, 3, which helped me. सेकंड स्टेप से. Yeah. So UN by VN I have done only. Okay. And then you have to apply a P test, the ratio test, P test. Okay. ये जो कॉन्वर्जेंसी टेस्टिंग में जो बेसिक टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट में आप लोगों को अभी बाद में कराऊंगा. Okay. The toughest test with respect to this sequence and series, इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, but till now all you have to do it by P test, और P test मैंने किया 3 के हिसाब से किया, तो मुझे वही ऑप्शन के हिसाब से देखोगे. So you check the options, so all you have to see whether 3 is equal to, at 3 it's convergent or not, the power series, and that I have checked. Next, a bounded, unbounded, closed, pretty boring type question, and one of the favorite type for Bartlett-Sherwood type of question के पेपर में ऐसे ही रहता है, वर्ड, ठीक है. E और F ऐसे दिया हुआ है, क्लोज्ड है, क्लोज, क्लोज, नॉट क्लोज, जितना तरीके का, 4 तरीके का ही हो सकता है, 2 में 2 स्क्वायर. ओके, सो लेट्स सी. 3 ऑप्शन रहता तो 9 देना पड़ता. सो En क्या क्या हो सकता है, E का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, dot. So hence half less than equal to x less than 1 for all values of x in E. And E क्या है, bounded. Okay. Also, ये जो 1 है, it's never equal to this E. Why? सर ने बोल दिया मानना है, ऐसा नहीं. If 1 belongs to E, then n by n plus 1 equal to 1. That means n equal to n plus 1. That means 1 equal to 0, which is a contradiction. एकदम बच्चों की तरह बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता. Okay. Clear? अब आगे बढ़े. But E contains what E contains? Infinitely many values in the neighborhood.
ऑफ 1। तो ये क्या बताता है? सो E इज not closed. Also, if this thing now as 0 less than x less than 1. So minus 1 less minus 6 less than equal to 0. So 0 less than 1 minus x less than equal to 1. So ये हो जाएगा 1 minus x less than equal to 1. So 1 by 1 minus x greater than equal to 1. ये हो गया तो f is closed. So 5 का आंसर है not closed and E is also closed. Hello, sir. Yes. सर ये पावर सीरीज मोनोटोनिकल सीक्वेंस पी रेशियो पी टेस्ट ये सब कब पढ़ाया था सर? एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया मैंने कोचिंग। अच्छा ठीक है, थ्योरी का एक और क्लास तो इसके बाद होगा ही। ठीक है, पावर सीरीज मींस विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटेंशन ऑफ अ पावर। जैसे मान लो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर, अब इसे तुम तोड़ रहे हैं, जो वैल्यू आएगा दैट्स कॉल्ड अ पावर सीरीज, जस्ट एन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर क्या है, n by 1 n plus 1, so you just put the values 1 by 1 plus 1 क्या होगा 2 होगा, फिर n की जगह 2 डालो, 2 plus 2 by 1 क्या होगा 3 होगा। तो अगर और भी तुमको अंदर से समझना है कोई टेंशन नहीं है। 0.5 2 by 3 क्या होता है बताओ वैल्यू, नहीं पता। 0.67 3 by 4 0.75 4 by 5 0.8। so these values are increasing, कहां से increasing, approaching towards 1। okay, इसी को हम लोग कहेंगे approaching 1। so this is the upper bound lower bound का फंड। तो कहां अप्रोच कर रहे हैं, कहां मैक्सिमम पहुंच, अगर मैक्सिमम पहुंचने वाला जगह हो गया दैट्स द अपर पॉसिबल बाउंड, और मिनिमम को अगर हम लोग लेंगे तो इट बिकम्स लोअर बाउंड। ठीक है, यही है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डू अ लिटिल बिट इजियर क्वेश्चन ऑन दिस थिंग जो 9 नंबर में है। मैं देख लूं, डू दिस। ये जो सीक्वेंस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, द सीक्वेंस क्या है, कॉन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर दोनों के बीच में झूल रहा है। 2 मिनट देता हूं, गिव इट अ ट्राई। कोई हिंट चाहिए तो पूछ सकते हैं। सॉरी सर सर या सर इसमें तो डायमंड सम लगा सकते हैं ना? या सर उससे आंसर 2 आ रहा है। या सो इट्स अ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, से कन्वर्जेंट। दैट्स इट। I haven't asked you the value here, but anyway, good one.
Please send it to me to this number 90623951123. Okay, so here is this sequence root n root over n plus 2 तो फिर से अगर लिखेंगे my plus root over of 1, then minus root over of 1, then plus root over 2 minus root over 2. This is the case. And yn equal to, they have given x1 dot 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 xn by n. So now as xn equal to minus xn minus 1, we can write it. जो ये xn हो रहा है ये इसके नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हो रहा है. Okay. But it's rule for n is a natural number and n is even. तो 2 4 मतलब 3, 2 मतलब 1, 6 मतलब 5, 8 मतलब 7, isn't it? That's the thing. So YL is actually giving you 0 if n is even. Now if n is odd, तो क्या होगा? Then yn is 1 by n root over n plus 1 by 2. And limit n tends to infinity yn करेंगे तब क्या आ जाएगा? 0. So in both the cases, it is giving us 0. So it is convergent. Clear? Next one. Yeah, option last one मैंने दिया था. It is convergent anyway. Number of distinct real root. Please apply the formula which I have told you and tell me the answer quickly. One. Sir, 1. How would I know? I'm going to solve it. Yes, answer would be 1. क्योंकि देखिए यहाँ पर पॉजिटिव रूट तो है ही नहीं. रियल नेगेटिव में भी माइनस 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 प्लस. So सारे माइनस and 1 plus. So only one change. So answer is 1. Clear है ये? सर ये रोल्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ? ये रोल्स थ्योरम से कैसे सॉल्व होएगा?
Oh, this theorem is not this one. The previous one can be solved by Rolle's theorem. Sir, can you solve that? Yeah. In आज नहीं, they will solve it later on. Okay. So we need to finish it off. अभी एक ही फॉर्मूला रखते हैं, एक ही दिन में दो फॉर्मूला एक सम के लिए नहीं देते. Okay, let me just go to the new one. सर ऐसे क्वेश्चन CMI में पूछते हैं. हाँ, क्या बिल्कुल. बस एग्जैक्ट पेपर थोड़ा सा अलग आता है, but these are taken from some previous year questions. ठीक है, चलिए एक पावर सीरीज के ऊपर सब give it a try on this one. If the power series of summation of a n x to the power n converges for x to the power 3, then the series summation of a n x to the power n. Hello sir. Yeah, just ask me questions regarding the sum. Rest of the questions ask me after the class. Okay, So the sir. power series of a n x to the power n converges for x equal to 3, and this is a n x to the power n. So how to do this one? So so given the power series this converges, so radius of convergence के ऊपर काम करना. R of the series is greater than or equal to 3, so R is greater than equal to 3. Also, we know that series converges absolutely inside the region of convergence. Okay, so the series converges absolutely for 3 values होंगे. Hence, the converge absolutely for -2 is the only one. Next, set of all limit point निकाल दो. क्या होगा? So y is equal to 1 by mod x. This whole thing. So this whole mod is mod x mod 1 plus mod x whole mod. This 1 minus less than this. Why? Because 1 by 1 plus mod x is positive. So less than 1 for all values of x belongs to R. Minus 1 less than
for all mod x is real, তাহলে y টা কি হচ্ছে -1 to +1. Yes. So here in this case, set of all limit points is -1 to +1. Limiting point में यही आंसर है, ये निकलेगा a. लेकिन as they have said the limit point, so you have to put the equal to. So D is the answer. Okay, not A. But D. So overall, we have done the first few questions on this. Okay. So let me first send you the PDF because it will take another 2-3 minutes of the time. And this has around 100+ questions which you need to solve and send it to me. Okay. It's taking some more time. In the meantime, see whether you have any doubts on the question.